And yes, today our webinar is indeed very, very special. As you all know, today is World Heart Day. मतलब आज का जो दिन है वो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके 1999 में एस्टैब्लिश किया था. So this day is actually for awareness, to spread awareness about heart disease. As we know that cardiovascular disorders जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट की वजह है. मतलब सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हार्ट डिजीजेस की वजह से ही होती है. एंड वी ऑल नो एटलीस्ट one person in our family or close friends is affected by a heart disorder, or maybe you all know someone who has expired due to heart attack. So ये सारे जो हार्ट रिलेटेड जो भी व्याधि हैं, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम आयुर्वेद से कैसे टैकल कर सकते हैं, हम अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कैसे, स्पेशलिटी प्रैक्टिस कैसे बना सकते हैं इन कार्डियोलॉजी, and what are the other factors that lead to heart disease, and that is how we can prevent heart disease, maybe do evidence-based treatment for heart disease. So as we know, this World Heart Day is a day to spread awareness as a part of Nirogstreet community program. हम लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि हमारा हर एक डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़ा है, they all should have their specialty practice, and the community of Ayurvedic doctors should grow. This is the main reason that we do different CMEs, different online CMEs on various topics. And today we have a very special guest with us, and Dr. Gurudatta Amin. He is actually from Mumbai, and he has been working as a chief medical officer with Madhavbag, which is very well known for their advanced cardiological treatments based on Ayurveda. So I would like to welcome Dr. Amin. Sir, would you please, yeah. Thank you very much, Priyanka ma'am. So without any delay, let us begin with Dr. Gurudatta's presentation. And sir, would you like to tell us something about your background initially, and then we can begin with your presentation? Okay, sure. I'm working in Madhavbag since last 15 years, and I'm a chief medical officer, as well as I'm a director for Medimi, which is a learning platform of Madhavbag, as well as I'm a director for Easy Ayurveda. So till now, I have trained so many doctors. I have come up with the therapies. I have come up with the quality control mechanisms, as well as the designs which will improve the patient engagement for the better outcomes. And all of you are aware that the Madhavbag is doing a lot in patient improvement or disease reversal, in terms of disease reversal of heart disease, diabetes, blood pressure, cholesterol, as well as hypothyroidism. So this is all my experience. I have done a BMS, then MD from Sanhita Siddhant, and then PGDMS 6 Sigma, which is a quality certification. I have done that flat rate level, and this is all what I have achieved till now. I was voted as a top 10 chief medical officers in India by a survey conducted by the CEO Insights magazine. So that's all about me. Great, Dr. Gurudatta. It's a pleasure to have you here with us. And I'm sure all the participants who have been with us, they are looking forward to understand what exactly they can practice in evidence-based cardiology, and how you can guide them about starting their own Ayurvedic practice. Some of us are maybe not doing that as well. Maybe everyone is scared to take on patients like that. Maybe they think it's very chronic, and eventually they refer patients like this. But with your session, I'm sure that doctors will be more confident about taking on a patient with a chronic heart disorder. Any cardiovascular disorders can be treated with Ayurveda, and Dr. Gurudatta is here to guide us about the same. So please begin with your presentation. We are looking forward to it. Thank you very much, ma'am. Let me start with my presentation. So I guess it is visible, right? Yes, screen's visible. Okay. So today I'm going to talk about evidence-based Ayurvedic cardiology. We are going to talk about heart disease, different types of heart diseases, along with that different presentation of heart diseases, and how to interpret the patient's condition
because patient will be coming to you in different conditions with the different symptoms. So how to interpret all those things in detail. So let's start with the session. The first point, that the symptoms of heart disease, all of us are aware that whenever someone is having heart disease, he will be having a complaint of this breathlessness on exertion, that is the exertional complaints, so chest pain on exertion, palpitation, dizziness, weakness, chest pain, leg pain in peripheral artery diseases, and edema and heart attack. So we have just named few of the symptoms just for a sake of an understanding. These are the symptoms which they will come to you with. It is not always necessary that these symptoms will be acute in origin. Majority of times it will be in a chronic origin. That means they will be having this complaint since long, 5 months, 6 months, 1 year, 2 year, and they will be coming to you. Whenever you will meet them, you will find them, all right, this is a heart patient. Now I need to refer this patient to the cardiologist, or let him take, because he is a serious patient having a ST changes, having a bundle branch block, or having a poor ejection fraction, or having a LV clot, and number of abnormalities. But believe me that in a heart disease, there are two different categories, I can say: a chronic heart problem and an acute heart problem. And every acute heart problem is a product of neglected chronic heart element. This is the basic philosophy. It's not that every acute heart disease is very well managed by the modern medicine. If the patient gets MI and ventricular fibrillation, then the chances of recovery is not so much. If the patient is inside the ICU, then also the interventions are not going to work very well in every case. Definitely in few cases the survival would be possible, but that will also be for a short time. Later on, again, the possibility of death within 6 months or 1 year is very high. What I want to tell you over here, the care of chronic heart disease is very much essential, and that can be done by an Ayurvedic physician very, very, very well. Because in Ayurveda we learn so many things. We learn Ayurvedic pharmacology, we learn Panchakarma therapy, we learn diet, the importance of exercise, importance of dinacharya. So all those things we keep on learning through our Ayurvedic Sanhitas, and that all knowledge we need to combine together and then start practicing all that knowledge in our in chronic cardiac diseases, so that we can get the best outcomes from it. So let me take you to next slide, and next slide is about coronary artery disease. Now, whenever we say heart disease, what thought comes in our mind? That is a coronary artery disease. That means a blockages, what is called as atherosclerosis. For some intention, I have mentioned the coronary artery disease and 5 different outcomes of it. So if someone is having a blockages inside his coronary artery, all of you are aware that you have a heart and your heart is delivering a blood to whole body through the aorta. And just after the aortic wall, there are 2 outlets which are called as a coronary outlets, and you have right coronary and left coronary, which is going to fulfill the requirement of your own heart. So heart is delivering a blood to whole body, and while delivering a blood to whole body, it receives its own salary, I can say, and that is through coronary arteries. Now, if you have a problem with the coronary arteries, what all can happen because of this? Because of this, myocardial infarction, what we call it as a heart attack, that is a possibility which we are generally afraid of. That is, a heart attack is the worst outcome of a coronary artery disease. We are always bothered about it, and I'm going to elaborate this MI in great detail. Then comes a chronic heart failure, what we called as a exertional dyspnea, which is nothing but the outcome of this chronic heart failure, where heart is not able to pump a sufficient amount of a blood into the circulation when body is under some sort of a stress, what we call it as exercise. So this is the reason why patient gets a breathlessness during exercise. At rest, generally patients are stable, but during exercise they get a breathlessness. This is called chronic heart failure. Then comes ischemic heart disease. Ischemic heart disease is something which is related to blood supply of myocardium. If your heart is receiving less amount of blood, definitely the oxygen supply to your myocardium will be less. There will be a poor blood supply to myocardium, which is going to cause some sort of a imbalances in the metabolic needs of your heart, and that is going to cause angina or chest pain. That is what the ischemia. Just remember one thing, that every time the ischemia won't be presented to you as a chest pain. It is not necessary that every person who is having a ischemia will come to you with a chest pain. Many of the times the patient will come to you with the significant ST changes, ST depressions, but patient won't be having any sort of a chest pain. So these are different entities you need to interpret these based on your experiences. Let's move ahead. Another thing is arrhythmia. Now, what is arrhythmia? Arrhythmia is nothing but the
ideally your atrium and ventricle should beat synchronously. That means first your right and left atrium, then your left ventricle. So this should be the synchronized movement. But when your heart is not beating in a synchronized way, the heart muscles are not behaving in a sinus nodal way. At that time, the arrhythmias will get established, and arrhythmias are the fatal. Arrhythmia will cause death of that patient. It's not the heart attack which is going to cause the death of the patient. Heart attack will cause your heart to go into arrhythmia, some sort of a unsynchronized movement. Say for example, this is my heart which is supposed to beat in this way. Now I have anterior wall MI, and because of anterior wall MI, my heart muscles have started fibrillating. Now they're not contracting, they're just fibrillating. If they are fibrillating, what is going to happen? There won't be a cardiac output. And if cardiac output is not there, then your brain will get irreversible brain damage within a 6 minutes. If your brain doesn't receive blood, that means if blood supply doesn't restores, then your brain will be dead. So this is what the overall consequences of coronary artery disease. This is what I can say. So first I will talk about myocardial infarction. Now, just to understand this concept in a better way, and to just I can say remove few blocks from our brain, I have mentioned one small story. Just see to it. Can I see the chat? Priyanka ma'am, can I ask them questions and they can post their answers in chat box? Okay, that's great. Okay. So 108 participants are there. Thank you very much. I hope you will be able to learn something good out of today's time investment. So let's go to the story of Mohan Joshi. So Mr. Mohan Joshi has got heart attack on 15th August 2018. So at 7 a.m. morning, he has got a heart attack, and all his relatives took him to the hospital because of the chest pain and all the giddiness and all the sweating. So in the hospital, he undergone angiography, and in angiography, it was found that he is having a 95% blockage. So a very simple question I'm going to ask you. On 15th August 2018 at 7 a.m. when he has got a heart attack, the investigation was done, angiography, and in angiography they found that the blockages are there 97%. So does it mean that the blockages are developed at 6:45 a.m.? So can I say like this कि heart attack आया था 15 अगस्त को? That means heart attack किसके वजह से आया था? It was because of the blockages. And if heart attack blockage के वजह से आया था, तो इसका मतलब है कि करीबन 6:45 by 6:45 there must be a formation of a 95% blockages. ऐसा हो सकता है? I would like to see answers in chat blocks. Is it possible कि 7 बजे अटैक आया था और अटैक का कारण ब्लॉकेज था? What was the cause of heart attack? It was a blockage told by the doctor, 95% blockage. And if blockage is the cause of a heart attack, then the formation of blockage must have taken place at 6:45 a.m. Am I right or wrong? Please post your answers in chat box so that I can understand what is your opinion about it. Heart attack आया है 7 बजे और डॉक्टर ने कहा है 95% ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज तैयार कब हुए? 6:45 को या उससे पहले? अगर हम कहेंगे कि उसके पहले, if we say कि no, it's not the way, it's not in this way, the blockages are chronic, then why the patient was not symptomatic on 14th August 2018? 14th August 2018, he was in a night at night family functions, so he was enjoying absolutely, and there was no any symptom, no any discomfort, everything was very fine. So on 14th August, the patient was comparatively stable. On 13 August, he was doing his office work. So on 13 August also, he was absolutely comfortable. On 12th August, he returned from his native place. So this is what the story of Mr. Mohan Joshi. So 12th August, it was exhausted day. 13th August, it was also heavy working day. 14th August, he was enjoying a night family function. On 15th August at 7 a.m., he has got a heart attack, and heart attack was caused by the blockages, and blockages were there 95%, which were detected on the angiography reports. Now, can I conclude this that ये जो कुछ blockages दिखे 12 बजे 15 तारीख को, वो सुबह 5:45 बजे तैयार हुए थे? Can I say like this or not? Chat box is not active, I guess. Okay, partially parallel circulation may be established. Good, Dr. Ganesh, this is also a good thought, but can you think more about it? Can you think more about it? कि question ये है कि blockages
12 बजे डिटेक्ट किए गए 95% और कहा गया कि इमीडिएट प्लास्टिक करो. सो माय सिंपल क्वेश्चन इज कि ये ब्लॉकेज यहाँ पर 15 अगस्त को आए या फिर 14 अगस्त को भी थे, 13 अगस्त को भी थे, 12 अगस्त को भी थे. अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ पाए तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉकेजेस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सही तरीके से पता चलेगी. लेट मी कम टू आंसर डायरेक्टली. These blockages are there since decades. So blockages takes near about a time of a decades to develop. What does it mean? It means that it's not a process of a one day. It's a process which takes 10 years altogether. It's a slow process which is going to take a good amount of a time. Then the question comes, अगर ये slow process है तो इसका मतलब है कि 14 अगस्त को भी blockages होने चाहिए थे. और अगर 14 अगस्त को blockages थे तो 15 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि 6:45 बजे या 7 बजे उस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ. सो द रूट कॉज फॉर हार्ट अटैक, इफ वी कंसीडर ब्लॉकेज, देन दिस ब्लॉकेजेस वर देयर इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ दिस पेशेंट on 14th of August also, as well as on the 15th of August also. Then the question arises, then what has happened at 7 a.m. in the morning जिस वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था. If you can answer this question, I will be really very happy. कि अगर ब्लॉकेज बनने में बहुत समय जाता है, हमने एग्री कर लिया, तो 14 तारीख को भी ब्लॉकेजेस होने चाहिए थे, सही बात है. 15 को भी थे, तो 15 तारीख को सुबह 7 बजे अटैक आया. तो ऐसा क्या हुआ 6:45 बजे या 7 बजे कि पेशेंट को अटैक आया? ब्लॉकेज तो पहले भी थे, तो अटैक किस वजह से आया? Expecting answers in chat box. I guess doctors are not posting their answers in chat box. Please try it out. At least try करें, कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा. गलत होगा तो भी चलेगा. Yeah, everyone please post it in the chat box. आप लोग question answers में यहाँ पर लिख रहे हैं, so I think you can put it on the chat box. Oh, they are answering, I guess. Yes, they are answering, but instead of that, they are answering in the question answer section. Please type your whatever comments you have. Please type it in the chat box. If you can see my message here. Okay. I've written please type here. So if you can see here, please type at the box. This is something which is interesting, which will attract you with the cardiology. Because if you learn this concept, then believe me, things are going to change completely, and you will find it a bit interesting, because then you will realize, we can do many things to prevent heart attack. But if you don't understand what exactly is happening, then it will be difficult for you. So let me see. Yes, and let's keep this session interactive. The more you interact with Dr. the more problem solving, doubt solving you will get right here during the session only. So please keep on asking and please keep on answering him in the chat box. Thank you. Hello, sorry to interrupt. I would like to say that our chat box is not enabled due to tech issues. So participants can answer in question answer box. Okay, fine. So now Okay, so doctors are posting, I guess, their concerns, but the answers I'm not getting over here. Fine. Now, let me tell you the answer to this question. On 12th August 2018, blockage was there. On 13th August also, blockage was there. On 14th August also, blockage was there. On 15th August at 7 a.m., what has happened? At 7 a.m., there was sudden blood clot formation. So the blood clot formation inside the coronary artery is responsible for heart attack, not the atherosclerosis. Make it very clear. Generally, it is said that the atherosclerotic arteries, they are vulnerable and they get burst up and then the blood clot is formed. This is not the true story. The true story is, though you don't have the blockages, there are the chances of heart attack. If your blood vessels are fragile, if your endothelium is damaged, then there are high chances of heart attack. That is a blood clot formation in your coronary artery. And all of you must be aware that how much time it takes for your blood to get clotted. Hardly few minutes. And this is a reason why Mr. Mohan Joshi has got heart attack on 15th August morning 7 a.m. So you need to find out what went wrong with the blood clotting system. What's the problem with the blood? Why it get clotted over there? Clotting of blood is a good mechanism or a bad mechanism? It is always a good mechanism. Everything in your body which is there, it is a good. But if it is happening without any reason or for a wrong reason, then definitely it is a bad.
So blood clotting is also a good mechanism. It is essential to prevent the blood loss. But if your blood vessels are damaged from inside due to your inappropriate diet, excessive stress, and lack of exercise, if your blood vessels are fragile from inside, there is a huge amount of endothelial dysfunction, then the blood may get clotted inside the coronary artery, and that is the cause of a heart attack. And this is the reason why treatment for heart attack, primary treatment, the main treatment for heart attack is not the angioplasty. The main treatment for heart attack is a thrombolysis. So I guess all of you are clear with this concept that the heart attack is not caused by the blockage. Heart attack is caused by thrombus, that means a blood clot. And why the blood clot is getting formed? Because of endothelial dysfunction, that means damaged blood vessels. This is the reason why our Sahitas, they start with the Rasayan Adhyay. So whenever we say Rasayan Adhyay, what do you mean by Rasayan Adhyay? Rasayan Adhyay means to take care of रस के आयातन, यानी आपके एंडोथेलियम का ख्याल रखने वाले द्रव्यों के बारे में विवरण रसायन अध्याय में आया है. So all dravyas in Rasayan Adhyay, they are talking about the drugs which can improve endothelial dysfunction. You take out any drug, it might be a amalaki, haritaki, anything. It is going to improve your endothelial functionality, and if it is improving endothelial function, definitely heart attack can be prevented. Your blood vessels can be maintained normal, elastic, and strong enough to prevent the blood clot formation. That's what all the story is. So let's move ahead. So let's move ahead. Now there is one more story, interesting story. Out of 100 patients who are getting a heart attack, what do you think? Everyone dies? Out of 100, everyone dies? No, that is not the story. 100 out of 100, hardly 21 are going to die. Not the everyone in that 100. Only 21 they will die, not the 100. What is going to happen with those rest of 79? Rest of 79, out of rest of 79, what is going to happen? Class B and class C, I can say. Out of those rest of 79, near about 30 to 40% will get symptoms of heart attack. So now they have a blood clot in their coronary, and now they have a symptoms of heart disease or a myocardial infarction, sweating, chest pain, breathlessness, giddiness, fainting, everything will be there. And the relatives will take them to the hospital. In the hospital, they will introduce blood thinning agents and the thrombolytic agents, which is going to lyse the blood clot. It might be a streptokinase, urokinase, RTPase. Right now, streptokinase no one is using, but they will be delivering the thrombolytic agents, which is going to lyse the blood clot, and patient will be absolutely fine. Within a week, he will get the discharge and he will be alive, survive. What is the second? What is the third category? Third category is the patient is having a heart attack, blood clot formation in coronary, same like A, same like B. C is also having a blood clot, but having no any symptom. Absolutely comfortable, doing his routine activity without any discomfort and without any problem, absolutely fine. And then after some time, after 6 months, when he visited a doctor and doctor took his ECG, doctor identifies, oh, you had a heart attack, right? Patient says, no, I don't know. Then doctor says, oh, I can see the Q wave formation is there, and that is significant. That indicates you must be having heart attack. Let's go and investigate, go for angiography, do this, do that. So in third case, heart attack has done nothing wrong with the body. No symptom, no mortality, no hospitalization. Patient is absolutely fine. In B condition, there was a symptom, there were symptoms, there were an unstable condition, hospitalization was required, but survival was there. In A condition, heart attack was there, no need of hospitalization. Within few minutes, your heart's blood supply reduced, and because of which the heart started vibrating, and that is called as a ventricular fibrillation, and patient died within 1 or 2 hours. How many of you are agree with me that ऐसे ही पेशेंट होते हैं? अब यहाँ पर अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है कि ऐसे 3 कैटेगरी के हार्ट अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सो ओवर हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. इन 3 ग्रुप में से कौन से पेशेंट का हार्ट मजबूत है? कौन से पेशेंट का हार्ट मजबूत है? आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू in QA session, wherever you want to post, please post either chat box or a QA session. इन 3 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी का हार्ट मजबूत है? ए का, बी का या फिर सी का?
Dr. Priyanka, are they posting any answers? I guess. Just type A, B, or C. What do you feel is right? Okay, Karan Dave sir said A. Sir, that heart has failed to perform its function when heart attack was there, and this is a reason. This was a reason why the patient died. So I can say that A was not healthy because it was not able to perform its function in the stage or in the phase of a myocardial infarction. But rest of the doctors, what they are saying that yes, the important thing is the C category, which is saying that though heart attack was there, but patient was not having any symptom, not having any discomfort, and patients were able to do all his activity without any difficulty, that person was having the most powerful heart. This is the reason why he survived. So now we need to identify or evaluate what was that reason. So dear friends, I'm giving you now the key of success, which can help you to treat your patient in a right way. Look what this research is saying. Vo2 Max. In all men and women, Vo2 Max, peak Vo2 remained a strong predictor of all cause of death. Among the men, a peak Vo2 Max below 15 was associated with the highest risk. Among the women, peak Vo2 below 12 was associated with the highest risk. Now, what this is? What is this? What do you mean by Vo2 Max? Vo2 Max is nothing but the exercise tolerance capacity of your heart. How much exercise your heart can do? What is your effort tolerance capacity? How much blood your heart can deliver to your whole body when you're exercising, when you're running? That is being defined by Vo2 Max, and that is nothing but the bala of your patient, which has to be examined with the help of exercise, because Granthakara has said balam vyayamena parikshet. So if your patient is having a proper bala, then he will be able to tolerate the heart attack. If that is not there, then definitely the outcomes would be very difficult to manage, or it will be fatal. So this is a reason why you should check the effort tolerance capacity of your patients, and this is a reason why Vo2 Max assessment with the help of stress test is essential. If your heart is able to pump out 35 ml of blood per kg per minute, and if you can walk on the treadmill modified Bruce protocol for 15 minutes, and if you don't get any symptom at the end of 15 minutes, and your heart rate and blood pressure response is within a normal range, then I can say that the possibility of you going in a category of C in case of a heart attack is very high. But if you have a poor effort tolerance capacity, if you have a BP abnormality, if you have a heart rate abnormality, if you have symptoms on exertion, the possibility of that patient falling in the category of A and B is very high. So this is now one more clue for us. What we need to do with respect to treatment, we need to improve the functional capacity of the heart. Layman language में बताऊं तो अगर आपका पेशेंट 500 मीटर चलने के बाद उसकी सांस फूल रही है, तो आपको ऐसी कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जिससे वो पेशेंट आराम से 2 से 3 किलोमीटर चल पाए. अगर आपका पेशेंट 500 मीटर की जगह पे 2 से 3 किलोमीटर चल रहा है, तो सैल्यूट है आपको. अगर आप ऐसा कुछ उसके साथ कर सको तो आप जीत चुके हो, ये समझ लेना. यानी आपके पास अगर कोई हार्ट का पेशेंट आता है और आप उसे पूछते हो कितना चलने के बाद सांस फूलती है, वो कहता है 500 मीटर, और आप आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो. 1 महीने बाद फिर से पूछते हो या फिर उसे चलने के लिए कहते हो कि चल के दिखाओ, और आपको पता चलता है कि उसे भेजा चलने के लिए और वो 2 किलोमीटर चल के आया, सांस नहीं फूली. This is something which is remarkable improvement. This is very big improvement. तो आप सब लोग ध्यान में रखना कि this should be your एंड पॉइंट क्राइटेरिया. जो कुछ आप इंप्रूवमेंट देखना चाहोगे क्रोनिक हार्ट फेलियर में, वो एक्सरसाइज टॉलरेंस पे देखनी है. अगर एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है तो हार्ट अटैक की कंडीशंस को भी सस्टेन किया जा सकता है. माधवबाग में हमने जो रिसर्च किया उसके बारे में 2 मिनट में बात करूंगा. 2 आर्म किए थे, ए और बी. ये एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था जिसमें एक ग्रुप को कन्वेंशनल ओरल मेडिसिन दिए गए थे, दूसरे ग्रुप को ओरल मेडिसिन एलोपैथी के प्लस पंचकर्मा ट्रीटमेंट दी गई थी. और रिजल्ट्स जो आया था वो ये था कि पंचकर्मा चिकित्सा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हमारी द्रव्य की चिकित्सा जैसे कि अर्जुन, पुनर्नवा, वचा, इन द्रव्यों के माध्यम से हम एलोपैथी के कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स पेशेंट में दे सकते हैं. एलोपैथी में दवाइयों में क्या दिया जाता है? एलोपैथी में दवाइयों में दिया जाता है एक डायरेटिक, एक दिया जाता है ब्लड थिनिंग एजेंट, एक दिया जाता है लिपिड लोअरिंग एजेंट, एक दिया जाता है ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एजेंट, एक दिया जाता है एंटी एंजाइनल, और पहले देते थे अभी देते नहीं है का पॉजिटिव कार्डियोटोनिक, यानी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दैट इज कार्डियोटोनिक. कौन सा? डिगॉक्सिन. लेकिन आजकल नहीं देते हैं, उसके साइड इफेक्ट है इसलिए.
बट कन्वेंशनल एलोपैथी के पास ट्रीटमेंट क्या है क्रोनिक हार्ट फेलियर की? कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर कम करो, लैसिक्स दो, डायूरेसिस करवाओ, हार्ट रेट को कंट्रोल में रखो, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स दो और वासोडायलेटरी ड्रग्स दो, एंटी एंजिनल ड्रग्स दो। अगर इन सारे द्रव्यों को आप ठीक से सोचो तो ये टेम्पररी रिजल्ट्स देने वाले। फॉर एग्जांपल डायूरेसिस, डायूरेसिस से फ्लूइड तो कम होता है लेकिन वीकनेस आता है, उसका क्या? वो डायूरेसिस के कारण जो पेशेंट बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसे थकान महसूस आती है, उसकी वजह से बहुत पानी पीता है, उसका क्या? So all these drugs, they have their own side effects. Definitely they are going to help you in emergency setup, but in a chronic conditions you should not rely on them, because if you rely on them in a chronic condition, then another possibility over there would be drug resistance. और अगर drug resistance आ गया तो acute case में आप use क्या करोगे? This is a reason why you should put your efforts to withdraw diuretics, withdraw beta blocker, withdraw calcium channel blockers, withdraw your blood thinning agents and withdraw lipid lowering agents. At Madhobag we do all these things. हम सारी ये दवाइयां step by step based on the parameters बंद कर देते हैं. We follow this protocol. So we have designed a drug tapering protocol and that we follow. With that help, we have analyzed the improvement in the heart failure patients and we have observed the fantastic results in heart patients, and that data we have published in Indian Heart Journal. कंपेरेटिवली एलोपैथी के ग्रुप, एलोपैथी के हॉस्पिटल में ये ट्रायल किया गया था, एक ग्रुप को कन्वेंशनल मेडिसिन दिए गए थे, एक ग्रुप को माधोबा की ट्रीटमेंट दी गई थी, एंड रिजल्ट्स आर देयर इन इंडियन हार्ट जर्नल. यू कैन गो एनी टाइम एंड सी टू इट. मूविंग अहेड, सर्वाइवल रेट. सर्वाइवल रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी हार्ट डिसीज की ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो व्हाई यू आर ट्रीटिंग अ हार्ट पेशेंट? बिकॉज यू नीड टू इंप्रूव हिज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ. दैट मीन्स यू नीड टू असेस द सर्वाइवल रेट इन दैट पेशेंट. और जब हमने ये सर्वाइवल रेट असेस किया, शॉकिंगली 3 years सर्वाइवल रेट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड in Madhobag patient was 85.27%. You can compare with the rest of the interventions. Post PTCA it was 73, post bypass 63, post heart transplant also it was 75, beta blocker 79, and Madhobag treatment stood very high, 85.27%. So ये क्यों हुआ? Because we followed all the basic principles of Ayurveda: diet, exercise, lifestyle modification, dinacharya, management with the herbal medicines, and Panchakarma Chikitsa in terms of a proper Shodhan. So this all was done with these patients, and this is the results why we got these outstanding results. Drugs, what we have used. Now just believe me that every time these drugs are not going to work. Drugs are there, but they are not the primary treatment. Drugs are going to help you a lot. For example, when you will advise, if you can make churna out of it, Arjun Pundunava Gokshur Dalchini Vacha, and start giving to all the heart failure patients, trust me, on the next visit he will definitely say that अब दम कम लगने लगा है, अब पैरों की सूजन कम हो चुकी है, अब वजन कम हो चुका है, अब हल्का लगने लगा है, अब सीने की धड़कन कम हुई है. ये इन द्रव्यों के गुणधर्म हैं. अर्जुन पुनर्नवा गोक्षुर दालचीनी वचा, ये कॉम्बिनेशन आप देना चालू कर दो आपके हार्ट के पेशेंट को, लिख के लो. 1 महीने बाद वो 100% आपको आके कहेगा कि इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी मिल रही है. बट क्या हमें सिर्फ दवाइयों पर ही निर्भरित रहना है? नहीं. Along with the medicine, you need to use a diet. Along with the diet, you need to use exercise. Along with the exercise, you need to improve his, dinacharya, how he's living his daily life. What is the schedule of his daily activities? खाने के बाद स्नान कर रहा है, स्नान करने के पहले खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? छोटी छोटी चीजें, दोपहर को सो रहा है या नहीं, रात को खाना कितने बजे खाता है, खाने की दिन भर की क्वांटिटी में रात का खाने की अमाउंट कितनी होती है, सुबह उठ के कितना पानी पीता है, दिन भर में कितना पानी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक कितना पीता है, सोडा कितना लेता है, नमक कितना खा रहा है, पैक फूड कितना खा रहा है, वाइफ घर में क्या क्या खाना बना रही है. इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, बिलीव मी, इस पेशेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाओगे. ये तो मेडिसिन है, ये आप देना चालू कर दो. जहां तक मैं विश्वास रखता हूँ, आपके पास कोई भी हार्ट का पेशेंट आए, और हार्ट का पेशेंट लेबल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, ओबेस पेशेंट है, चलने के बाद सांस फूल रही है, कंफर्म है ये हार्ट का पेशेंट है. चलने के बाद अगर सांस फूलने लगे डायबिटिक पेशेंट की, लिख लेना, दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर. एंड ये मैं नहीं कह रहा, कैनेडी सारे क्लासिफिकेशन कह रहे हैं कि इफ पेशेंट इज गेटिंग एक्जिस्टेंशियल डिस्निया, ही इज फॉलिंग इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हार्ट फेलियर. अगर वैसा दिखाई दे और वो आपके पास डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर कोई भी अदर व्याधि के लिए ट्रीटमेंट कर रहा है, प्लीज सी टू इट कि उसके हार्ट की भी आप ख्याल रखो. माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कि आपके पास वो भले घुटनों के लिए आए, ठीक है, बट सांस फूल रही है उसकी, हार्ट के लिए दवाइयां चालू कर दो, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है. बिकॉज जब तक कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आपके सारे स्रोतों में खून पहुंचेगा कहां से?
और अगर आप चाहते हो कि घुटने की कंडीशन इंप्रूव हो जाए, किडनी की कंडीशन इंप्रूव हो जाए, आंखों की कंडीशन इंप्रूव हो जाए, तो कार्डियक आउटपुट तो चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो कुछ सारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी थ्रू हार्ट ओनली. सो दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड यूज these medicines in all the cases. छोटी छोटी पुड़िया बना दो, पुड़िया दे दो, सुबह शाम देना चालू कर दो, आपको रिजल्ट्स उससे मिलना चालू हो जाएगा. Let's move ahead to ischemic heart disease. What is the ischemic heart disease? Imbalance between requirement and supply. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना. ये एलोपैथी की कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हम आयुर्वेद में बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई नॉर्मल है, डिमांड बड़ी है, इस वजह से सीने में दर्द हो रहा है. हार्ट रेट बढ़ा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, आफ्टरलोड बढ़ा, प्रीलोड बढ़ा, तो चेस्ट पेन होगा जिसका संबंध मायोकार्डियल ब्लड फ्लो से नहीं है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. अगर किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से उसे चेस्ट पेन हो रहा है, दैट इज नॉट ड्यू टू डिफेक्टिव कोरोनरी सर्कुलेशन. अगर किसी के हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर एलवी हाइपरट्रॉफी हो चुका है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स बढ़ चुका है, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम में नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम में मसल्स है. अगर किसी का आफ्टरलोड बढ़ा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बहुत सारे रीजन है, राइट फ्रॉम स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारे रीजन है, ओबेसिटी, इन सारी चीजों से आफ्टरलोड बढ़ा है, तो डेफिनेटली चेस्ट पेन होगा. तो वहां पे कोरोनरी का प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज डिमांड. प्रीलोड बढ़ा है, प्रीलोड बढ़ा यानी बहुत पानी पी रहा है, ओवर हाइड्रेट हो चुका है, बॉडी को बहुत हाइड्रेट कर रहा है, बार बार शरीर में पानी बहुत जम रहा है, प्रीलोड बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ा तो हार्ट पे स्ट्रेस आएगा, चेस्ट पेन होगा. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी. सो डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पेशेंट में क्या हुआ है. उसका हार्ट रेट देखो, बीपी देखो, चलने के बाद कितना हार्ट रेट बढ़ता है वो देखो, वजन देखो, उसके बॉडी में फ्लूइड कितना है, पैरों पे सूजन कितनी, ये देखना चालू करो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलने लगेगी. रेस्टिंग में आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है 215, एक्सरसाइज के दरमियान हो जाता है 750, राइट. अगर ये एक्सरसाइज के दरमियान 750 ml नहीं हुआ, जनरली आप जब रेस्ट कर रहे हो तो 215 ml ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को है, भागोगे दौड़ोगे तो 750 होना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको चलने के बाद चेस्ट पेन होने वाला है. अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि व्हाट इज हैपनिंग विद द ब्लड वेसल्स. हमारी कोरोनरी आर्टरीज ये लोहे की बनी हुई नहीं है, इट इज इलास्टिक, एंड इलास्टिसिटी इज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक. इलास्टिक क्यों है? क्योंकि ये रिस्पॉन्डिंग है यानी ये डिमांड को रिस्पॉन्ड करती है. कैसे करती है? डिमांड बढ़ी तो ये डायलेट होगी, डिमांड नहीं है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी. ये जो इसकी ताकत है ना, ये यूनिक है. रबर में ये ताकत नहीं होती. रबर को जब खींचा जाएगा तब वो बड़ा होता है, डिमांड बढ़ी इसलिए बड़ा नहीं होगा वो. तो ये बात ध्यान में रखना. जब वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड है उस समय भी उसमें इलास्टिसिटी है, जब वो डायलेट होती है तो ये डायलेटेशन डिमांड के हिसाब से किया जाता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेटेशन एंड इलास्टिसिटी, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो आपके वेसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज में, ये जो डिमांड के हिसाब से डायलेट होने की क्षमता थी वो कम हो गई है. क्यों कम हो गई है? बिकॉज ऑफ द प्लाक फॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ द वैस्कुलर इलास्टिसिटी कम हुई, क्योंकि कैल्शियम वहां जमा है, फाइब्रस प्लैक वहां जमा है, फैटी प्लैक वहां जमा है. इस वजह से वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो चुकी है और इस वजह से चलने के बाद सीने में दर्द होता है. अब क्या इसे रिकवर किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है. माधोबाग हैज डन a significant research in it. Myocardial perfusion imaging किया था, and based on that, which was presented in European Society of Cardiology, it says that yes, you also can improve myocardial perfusion much more better than angioplasty and bypass surgery. Believe me, angioplasty bypass surgery से बेहतर मायोकार्डियल परफ्यूजन अपने आयुर्वेदिक चिकित्साओं से किया जा सकता है. चलो मैं आपको जल्दी से मेडिसिन बता दूं. ये मेडिसिन ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल दवाइयां हैं. हमें लगता है कि ये क्या काम करेगी, but start giving it and see the miraculous results. Amalaki, Arjun, Gokshur, Dalchini and Guduchi. If you start giving these medicines to a patient who is having a chest pain, see the miraculous results. Miraculous results आएंगे. सुबह दोपहर शाम 3 बार आप इस मेडिसिन को दे सकते हो. क्वाथ देना है तो क्वाथ दो, लेकिन मैं कहूंगा चूर्ण दो, वो सही है. तो चूर्ण अगर आप देते हो दिन में 3 बार, 2 से 3 ग्राम तक, जैसे पेशेंट पैलेट कर यानी कंज्यूम कर सकता है, 3 ग्राम दिन में 3 बार, ये अगर आप देते हो, देखो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ चेस्ट पेन मिलने वाला है. सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहना. ये ड्रग्स है, ये दवाइयां हैं, इसमें से दालचीनी के कारण थोड़ी एसिडिटी भी बढ़ सकती है, उसे भी मॉनिटर करते रहना. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो 2 बिंदास डोज, क्योंकि चूर्ण का डोज हमें अच्छा खासा देने के लिए कहा गया, 10 ग्राम तक दे सकते हैं. तो 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार देने में कोई भी हर्ज नहीं है. तो दिस इज व्हाट द मेडिसिन फॉर इश्केमिक हार्ट डिसीज. बट अगेन सेम स्टोरी जो मैंने
CHF में गई थी, सिर्फ इसके ऊपर निर्भर मत रहना। अब पेशेंट हु इज ओबेस, उसका वेट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए तो डाइट भी करना है। डाइट नहीं करोगे, सिर्फ मेडिसिन खाओगे और कहोगे कि चेस्ट पेन कम नहीं हुआ, सही नहीं होगा। वेट लॉस भी करना है, उसके लिए टारगेट रखो, उसके लिए पेशेंट को मॉनिटर करते रहो, मोटिवेट करते रहो, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वंस द पेशेंट लूजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट। सारे लाइफस्टाइल डिसीज में एक जनरल रूल ध्यान में रखना, 10% वेट लॉस जनरल रूल है। 10% वेट लॉस करो, उसकी लाइफस्टाइल डिसीज 80% रिवर्स हो जाएगी, उसकी लाइफस्टाइल डिसीजेस 80% रिवर्स हो जाएगी, बिलीव मी 100% होगी। तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, डाइट प्रिंसिपल्स को आपको वहां यूज करना है। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द ब्लॉकेजेस। आई वुड लाइक टू मैं सुनना चाहता हूं आपसे कि आपका क्या कहना है, ये ब्लॉकेजेस कभी रिवर्स होते हैं क्या? ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हैं क्या? व्हाट यू थिंक? Do you think the blockages in coronary arteries, in this angiography reports you can see in this coronary artery blockages are there? Those who are raising hands, if you can post in a QA, then I will be happy. Sir, medicine कैसे और कितने डोज है? As I said, सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाओ, 3 grams 3 times दो गर्म पानी के साथ, या फिर अर्जुन और इष्ट के साथ दो, चलेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। A patient with chest pain related to whole hand advises, देखो उसकी स्ट्रेस टेस्ट करवा लो, लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लो, 2D को करवा लो, और चलने के बाद अगर ये पेन हो रहा है तो ये कार्डियक है, अगर चलने के बाद नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, तो ये नर्व ओरिजिनेटिंग है। पेन दो तरीके से, हर बार पेन हार्ट का ही होगा ऐसा नहीं है, प्लीज माइंड इट वेल। Every time that pain which is originating in your heart, it need not to be a heart, every pain which is originating in your chest, heart का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। सबसे पहला रूल क्या लगाओगे? चलने के बाद अगर पेन बढ़ रहा है, that is a cardiac। चलने के बाद अगर वो वैसा ही रह रहा है तो वो कार्डियक नहीं है। ये इतना सा सिंपल सा टेस्ट या सिंपल सा एजुकेशन आपके पेशेंट का बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आप देखोगे नॉन कार्डियक चेस्ट पे, सीने में दर्द हो रहा है, कैसे दर्द होने लगा? दोस्त की डेथ हुई, किससे? हार्ट अटैक से, और इसको चेस्ट पेन चालू हुआ। दिस इज अ मोस्ट साइकोलॉजिकल। ये पेशेंट जब चलने के लिए जाता है, व्हेन ही गोज फॉर एक्सरसाइज, तब उसका चेस्ट पेन डेफिनेटली कम हो जाता है। सो दैट इज थियरी व्हाट यू नीड टू फॉलो, कि चेस्ट पेन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वेदर इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हार्ट और नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हार्ट, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो फ्यू क्वेश्चंस वेयर देयर, आई ट्राई टू आंसर। और कोई क्या कह रहा है देखता हूं मैं। यूज लेखन द्रव्य टू रिमूव ब्लॉकेजेस। मैं पूछ रहा था कि ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हैं क्या? कैन वी रिवर्स द कैल्सिफिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। डेफिनेटली ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हैं। वी हैव proven this in so many patients. मैं उनका डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, and this was something very exciting for us when we see कि CT एंजियोग्राफी के वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट पे पेशेंट के ब्लॉकेजेस का वॉल्यूम कम होने लगता है, 10-20 नहीं 30% तक कम होता है। ये जब आप देखते हो कि ब्लॉकेज का वॉल्यूम ही कम हुआ, this is really very difficult thing for the radiologist also to believe in it. It is such a beautiful thing, because when you follow all the advices given in the Samhita, right from improving dinacharya, improving diet, improving the stress levels or reducing down the stress levels, performing all the panchakarmas properly, along with that doing a proper shodhana chikitsa, you are going to get outstanding results, and blockages can be reversed. Definitely, that is definitely possible. And the system which is responsible for that is a cholesterol reverse transport. In this system, your blockages are reversed by this cholesterol reverse transport system mechanism, because you have your own HDL in your body, which is manufactured by your liver. Your liver manufactures 2 lipoproteins. One is a VLDL and one is a HDL. This VLDL gets converted into LDL in a circulation, and then it is thrown out of your body. But if this LDL is retained in your blood for longer duration, then it will increase the cholesterol levels in your blood. HDL has a responsibility to eliminate the cholesterol from the circulation, so we call it as a good cholesterol, and the LDL as a bad cholesterol. But just believe me and follow this principle. If you start improving your diet, which is responsible for the production of the rasadhatu, and all of us are aware that the rudrog rasavahini dushyanti, so viguna hridayam gata. So viguna hridayam gata means, so जब दोष रस में गएंगे तभी जाके रुद्रोग हुआ है। सो हार्ट डिसीज ये रसवह स्रोतस की विकृति है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा संबंध आपके आहार से है। यहाँ पर भी आप वही प्रिंसिपल लगाओ, 10% वेट लॉस, जो कुछ पेशेंट का बॉडी वेट है उसमें से 10% कम करना है। डाइट में लंघन चिकित्सा का इस्तेमाल करना है। लंघन चिकित्सा के साथ साथ हमें
स्नेह का भी इस्तेमाल करना है, यानी क्वांटिटी कम करेंगे लेकिन स्नेह का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो डेफिनेटली हार्ट पेशेंट में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। स्नेह का इस्तेमाल करने के लिए मैं कह रहा हूं तो इसके बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न तो आएंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, बट डोंट वरी, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द endogenous and exogenous cycles of the triglycerides, cholesterol, then you will definitely start loving your own Ayurvedic principles of अभ्यंतर स्नेहपाना फॉर द शोधन पर्पज, एंड देन यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल। ये सारी चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी समय मिले तो निश्चित रूप से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बट नाउ फॉर नाउ blockages definitely can be reversed. Just see to this data, which is a data of 162 patients, which says that the blockages कम हुए हैं करीबन 29.44% से। 162 पेशेंट्स का डेटा है। TAV का मतलब है टोटल अथेरोमा वॉल्यूम इंप्रूवमेंट। कितना इंप्रूवमेंट हुआ? तो करीबन एवरेज इंप्रूवमेंट 29.44% आया। सो दिस वाज द आउटकम ऑफ अ एक्सटेंसिव रिसर्च। आपको बताऊं ये सीटी एंजियोग्राफी की कॉस्ट 15,000 है, तो ये 162 पेशेंट्स में बिफोर एंड आफ्टर सीटी एंजियो करने का खर्चा पूरा रिसर्च ट्रायल माधोबाग ने उठाया था। इन पेशेंट्स को डाइट किट दिए गए थे, इन पेशेंट्स को पंचकर्म किया गया था, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया गया था, और इसके बाद ये रिजल्ट्स मिले थे। What does it indicate? It indicates that definitely blockages can be reversed. Let's move to the next medicines for atherosclerosis. Again, if you will ask me what is a medicine for atherosclerosis, I will say Virecin is a medicine for atherosclerosis. I will say all the drugs which are going to work on the endothelial dysfunction, these are the medicines for atherosclerosis. I will say all those medya dravya which are going to reduce down the stress of the patient, they are going to reduce down the atherosclerosis. Why? Because ultimately, if you will see to the development of a heart disease, chintana mati chintana, whenever you are thinking too much, whenever your amygdala is swollen, I hope everyone must be aware about the amygdala. You have some a small body in your brain which is called as amygdala, which is a first stress responder. Whenever you come across any sort of a stress, this amygdala is going to respond. And if your amygdala is swollen and is a hyper, I can say hyper amygdala. What do you mean by hyper amygdala? Immediately responding to every stimulus. So if something bad comes to you, immediately it is going to respond. If this is your behavioral pattern, then definitely the heart disease आपको होने वाला है। गुस्सा ज्यादा हो रहे हो, हार्ट डिसीज डेफिनेटली होगा। बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो, हार्ट डिसीज होगा। आपकी रिएक्शंस कंट्रोल नहीं है, हार्ट डिसीज होगा। दिस इज वेरी मच श्योर। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंबैलेंस आ चुका है। Your body is driven by ANS, autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. Both these systems works in a very synchronized way. Sympathetic कभी कंट्रोल करती है, कभी पैरासिम्पैथेटिक। ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ना, ये बहुत स्मूथ होनी चाहिए। अगर ये स्मूथ है तो फिर आपको हार्ट डिसीज नहीं होगा, बट अगर ये स्मूथ नहीं है, अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द मेडिसिन: आमलकी, अर्जुना, गोक्षुरा, गुरुजी, दालचीनी, विविधका एंड पाठा। You should use all these medicines. I won't be going into depth of it कि यहाँ पे पाठा क्यों है, विविधक क्यों है, दालचीनी क्यों है, गुरुजी क्यों है, गोक्षुरा क्यों है, अर्जुना क्यों है, अमलकी क्यों है। बट मैंने आपको कोर फिलोसॉफी बता दी है कि that is a core philosophy how we need to reverse this atherosclerosis. This is definitely possible. If you'll ask me what do we do at Madhavabad, we do panchakarma therapy. We give them a diet box which is called as a reverse to reduce down the fat accumulation in the coronary arteries, calcification or the fibrous plaque accumulation, whatsoever it may be. But with this reverse diet kit, definitely that can be reversed. Then we monitor those patients with the help of our digital engagement. So we have our own app which we use for our patients, and our patients are strongly followed, very strongly followed, continuously followed for their compliances with respect to diet, with respect to exercise, with respect to their medication, with respect to their vital parameters. And as we keep on following them, we are getting outstanding results. And I expect you also to follow your patients. Just remember one thing, all the BMS doctors over here, there are app companies coming in the market, right? And those app companies, they are planning to, they're planning for a huge investment. You must have gone through those app companies on Facebook or digital media. So they are planning for huge investment. There is one company which has raised the funds of 1,000 crore. And why they have raised the crores? To attract the diabetic patients, heart disease patients, and the lifestyle disease patients. Now you just tell me, if BMS doctors start practicing preventive cardiology, then what is going to happen? Definitely all these patients will come to you, because these app companies are continuously educating the patients about the importance of diet, exercise, lifestyle modification.
If this patient, they get a BMS doctor who is confident enough to speak on the myocardial infarction, coronary artery disease, LV clot, LV dysfunction, definitely these patients are going to come to him. And if then you start taking a proper compliance, taking care of the proper patient education, diet follow-up, exercise follow-up, definitely you are going to improve a lot in your clinical practices. So that's what Madhav Bagh is doing with its patients. So at present, there are so many medicines available in the modern, modern list. If you'll ask me any drug out of it, say for example, let's take a beta blocker. What's wrong in it? It's a good drug. You take a beta blocker, then you go and shout on that patient. His heart rate will not go up. Why? Because whenever someone shouts on you, what's going to happen? Your sympathetic system gets activated. That sympathetic system will go to your heart and will stimulate the beta-1 receptor. But as the beta-1 receptor is already blocked, that sympathetic system won't be able to stimulate that beta receptor. And this is the reason why his heart rate won't go up. Now, is it a good thing or bad thing? If you will study the exercise physiotherapy, a heart patient has to do a regular exercises. If that heart patient is doing a regular exercises, then and then his heart can be maintained very well, or else his heart will go weak day by day. But if you're giving a beta blockers, what you're achieving? Are you achieving something extraordinary? No, you're just, it's like that. If you're not able to walk, just take a rest. That's all. But that is not the way of managing a heart failure patient. You should do something by which that patient will be able to walk properly. And this is what you need to learn. So go through all these medicines. Say, for example, calcium channel blockers. Now, how many of you can answer my question? Why you need a calcium? For a heart, calcium is essential or not? Please answer this question. If you can answer, I will be very happy. If you can answer why you need a calcium. Is it a calcium bad for a heart or a good for a heart? How you will put it, whether it is a good for heart or a bad for heart. Can you answer in a question and answer session? Question and answer section. If you can answer, calcium is a good or a bad? Okay, doctors are not responding, I guess. Okay, good for a heart. Fine. Why it is a good for heart? Because calcium, without calcium, how your heart can do the job of a contraction? Go to the basic lectures of physiology. What do you know? Without calcium, that actin and myosin won't be able to roll upon each other and contraction won't take place. So for a contraction, you need a calcium. Without calcium, your heart can't generate a cardiac output. So calcium is very much essential for your body. Now tell me what you are doing by giving a calcium channel blocker. You are reducing down the force of contraction of your heart. So that way the patient won't be able to walk for a longer duration. You're reducing down the peripheral resistance, you're reducing down the blood pressure, I accept, but at the same time, you're affecting the contractile capacity of your heart. So why the peripheral resistance was raised? It was because of the obesity. Why it was raised? Because of the AMA in body. Whenever you have an AMA in a body, the peripheral resistance goes up. जब आपको आम होता है, आपको जो heaviness महसूस होता है, that is nothing but the peripheral resistance is going up. Once you start doing a पाचन चिकित्सा, once you start doing exercises, peripheral resistance drop होगा, blood pressure control में आ जाएगा. क्या जरूरत है calcium channel blocker देने की? Go through the side effects of these drugs, what we call it as a calcium channel blockers, beta blockers, whatever you say, a statin, something which is a very funny drug, I can say. Statin तो सबसे funny drug है. आप statin दो, आपको कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है, but अंदर के सारे प्रॉब्लम वैसे के वैसे रहते हैं. सिंपल सी बात है ना कि मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे आहार में खाना ज्यादा जा रहा है. अब खाना तो अंदर गया, लेकिन मैं स्टैटिन ले रहा हूं, जिस वजह से खाने में से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल तो कम मिलेगा. लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल का जो प्रीकर्सर था, वो प्रीकर्सर तो ब्लड में ही रहा ना. अगर वो ब्लड में रहा तो वो जरूरत से ज्यादा बन रहा है ना. अगर वो जरूरत से ज्यादा बन रहा है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नहीं है, लेकिन ये जो कुछ प्रीकर्सर ब्लड में है जिसे आप चेक ही नहीं करते, वो तो आपको डैमेज करेगा ना. This is the reason why ग्रंथकार has very brilliantly divided the diseases treatment. लंघन ब्रुहणीय, एक तो लंघन करो, नहीं तो ब्रुहण करो, प्रिंसिपल डिफाइन करो और ट्रीटमेंट पे लग जाओ, रिजल्ट्स आपको 100% मिलने वाले हैं. तो यहाँ पर मुझे लगता है इन सारे द्रव्यों के बारे में जब आप सोचोगे तो आपने ठीक से सोचना है. When we talk about angioplasty, go through the trial called courage, COURAGE. What is the courage? Courage is trial जो कहती है कि प्लास्टिक करने के बावजूद भी हार्ट अटैक के प्रिवेलेंस में 2 ग्रुप किए थे, एक की प्लास्टिक की थी, दूसरे ग्रुप की प्लास्टिक नहीं की थी, और आउटकम ये कहता है कि दोनों ग्रुप्स में हार्ट अटैक में भी कोई डिफरेंस नहीं था, मॉर्टेलिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं था. इसका मतलब फिर प्लास्टिक क्यों की?
द क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस, व्हाई वी डिड अ प्लास्टी। तो करेज ट्रायल है, आप डेफिनेटली रेफर करिएगा, वो आपको क्लियर कट बता देगा कि प्लास्टिक करने के बावजूद भी हार्ट अटैक और मॉर्टेलिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। जब टाइप करो गूगल पे आपको करेज ट्रायल मिल जाएगा। सेकंड, ऑर्बिटा ट्रायल। ऑर्बिटा ट्रायल में तो उन्होंने और मजा की, मजा कैसा किया था कि वो शैम मॉडल था। शैम मॉडल आप सब जानते होंगे कि पेशेंट को सब लोगों को प्लास्टिक के लिए लेके गए और उसमें से सब लोगों का प्री ऑप किया, ड्यूरिंग ऑप भी किया, पोस्ट ऑप भी किया, लेकिन 50% को एक्चुअल स्टेंट डाला था, 50% को स्टेंट डाला ही नहीं था। इस ट्रायल में भी आउटकम सेम थे, जिनको स्टेंट डाला था, जिनमें नहीं डाला था, दोनों ग्रुप में कोई भी वेरिएशन नहीं था। इसके पीछे का रूट कॉज समझ लो कि हमें अगर सचमुच मॉर्टेलिटी कम करनी है, सो वी नीड टू वर्क ऑन बेसिक्स ऑफ लाइफस्टाइल और प्रॉपर हेल्थ, दैट इज डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप ये करते हो तो इन सारे द्रव्यों की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं। इसके साथ साथ ये प्रमेह के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। अक्सर हम हमारे ग्रंथकारों ने जो लिखा है वो भूल जाते हैं, ये भूलना मत कभी। साध्य कफोत्तदशः, चरकाचार्य ने पहले ही कह दिया है कि कफच प्रमेय साध्य है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सामने आने वाले डायबिटिक्स पेशेंट को कफच प्रमेय है या पित्तच प्रमेय है या वातच प्रमेय है, ये ढूंढो। बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा देते हैं थोड़ा सा पढ़ के कि मधुमेह का मतलब यूरिन में शुगर, और यूरिन में शुगर है इसका मतलब मधुमेह हुआ, मधुमेह वातज प्रमेह का प्रकार है, इसका मतलब असाध्य है, इसका मतलब डायबिटिक असाध्य है। बट थोड़ा सा एनालाइज करो, सचमुच ग्रंथकारों ने क्या लिखा है ढूंढो। मधुमेह लिखा है तो मधुमेह का मतलब यूरिन में शुगर नहीं, मधु के समान मूत्र का गंधवर्ण। अगर मधु के समान मूत्र का गंधवर्ण हो जाए तो उसे मधुमेह कहो। तो क्या डायबिटिक के पेशेंट में मधु के समान गंधवर्ण होता है? नहीं होता है। वहां पे सिर्फ हल्की सी शुगर आपको यूरिन में जाती हुई दिखती है, जो आपके टेस्ट में पता चलता है। अगर ये सिचुएशन है तो आपको सचमुच देखना पड़ेगा कि ये जो पेशेंट मेरे पास टाइप 2 डायबिटीज के आते हैं वो टाइप कफज के हैं, पित्तज के या वातज के हैं। अगर वो फॉर्चुनेटली कफज के होंगे तो वो 100% रिवर्सबल है। माधोबाग में हमने ये रिसर्च किया और देखा कि मेजॉरिटी ऑफ टाइप 2 डायबिटिक बेस्ड ऑन देयर यूरिन एग्जामिनेशन व्हाट द ग्रंथकार हैज टोल्ड अस टू डू, we have observed that they are type 2 diabetic, and if they are type 2 diabetic they are 100% reversible. ये मैं मेडल लगे हुए लोग दिखा रहा हूँ, ये कौन है मालूम है? ये मेडल दिखे हुए लोग, ये सारे माधोबाग के पेशेंट्स है जिनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट निगेटिव हो चुका है। जीटीटी निगेटिव होने का मतलब है डायबिटीज पूरा रिवर्स हो जाना, और ये पूरा रिवर्स हो चुका है, इसलिए उन्हें मेडल देके, सर्टिफिकेट देके हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि आपका जीटीटी 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर 140 के नीचे है, इसलिए आप डायबिटीज से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ, जाओ एंजॉय करो, गोलियां बंद, सब आपकी लाइफ एंजॉय करो। ये कहने तक हम पेशेंट को लेके जाते हैं। और एक दिन का काम नहीं है, सिर्फ आपने कोई तो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ले दिया और हो गया, ऐसा भी नहीं है। हार्ड फॉलोअप लेना पड़ता है। उस पेशेंट को हफ्ते में 2-2 दिन बुलाते हैं, कंटिन्यूअसली एवरी डे उस पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, और इसका फल मिलता है 3 महीने में उसका जीटीटी निगेटिव हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट निगेटिव हम करते हैं। उसके एविडेंसेस ऑफ डायबिटिक रिवर्सल आज तक हमने जो पेपर पब्लिश किए वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ हमने ये एक पेपर पब्लिश किया था एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया जापी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि डायबिटिक पूरा रिवर्स होने के 1 साल बाद क्या होता है। So these are all extensive studies what we have done till today. आज के इस सेशन से मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा और सिर्फ आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कार्डियोलॉजी को आप डर डर के मत देखो। सबसे पहले खुद के लिए एक ईसीजी मशीन परचेस कर लो। 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, 30,000 की होगी, लेकिन वो परचेस कर लो। 30,000 कोई बड़ा नहीं है। हम अगर सीखने में 20 लाख डालते हैं, हम अपने एक बाइक में 70 लाख डालते, 17,000 डालते हैं, हम अपने मोबाइल में अगर 25-30 हजार डालते हैं, तो एक ईसीजी मशीन 30,000 डालने में कोई भी बुरा सौदा नहीं है। ईसीजी लेके आओ, मशीन लेके आओ, हर एक पेशेंट का ईसीजी करना चालू कर दो। 1 महीना सिर्फ हर एक पेशेंट का ईसीजी आपने करना चालू किया, आपका थोड़ा बहुत पैसा जाएगा, बट 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। धीमे धीमे आप ईसीजी के कुछ कोर्सेस हैं, माधोबाग में भी हम रन करते हैं, वो करवा लो, और उसके बाद आपकी कार्डियोलॉजी के प्रति आपका झुकाव, रुझान धीमे 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 बढ़ते जाएगा। शोधन चिकित्साएं हो, दिनचर्या हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, सारी चीजों के माध्यम से ईसीजी के बहुत सारे चीजों पे आप बदलाव ला सकते हो। फिर वो एसटी डिप्रेशन हो, फिर वो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, या फिर स्मॉल जो कुछ एट्रियल अरिथमियाज होते हैं, या फिर एवी नोडल अरिथमियाज होते हैं, उनमें होने वाले बदलाव हो, ये सारे बदलाव लाना पॉसिबल है। हमें सिर्फ एक कदम आगे उठाना है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
Wow, it was such an amazing and informative session. मतलब अभी आप रुकने के लिए कह रहे हैं. I'm pretty sure everyone is saying कि please continue, please tell us more. So, and I can see that it's more than 140 people are together with us, and it was really really informative. और आपने जो जिस तरह से सब explain किया, that was really very very easy to understand. लाइक कौन सा द्रव्य यूज करना है, और बाकी आप कैसे डायग्नोस्टिक्स को करना है, कैसे देखना चाहिए, रिपोर्ट्स कैसे पढ़ने चाहिए. एंड आई एम वेरी श्योर दैट एज आयुर्वेद डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द आयुर्वेद डॉक्टर्स लाइक 80% आई वुड से कि ये डायग्नोस्टिक्स में ज्यादा नहीं देते हैं, नहीं करने के लिए कहते हैं. एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज कॉलेज में नहीं ठीक से पढ़ा होता है, या तो रीडिंग्स कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी पता नहीं होता है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन. एंड ईसीजी तो किसी को समझ ही नहीं आता है तो वो बताते ही नहीं है. मे बी दे गो फॉर समथिंग विच इज रिटन इन लेमैन लैंग्वेज, but they don't understand. None of us really understand ECG. None of us really understand how exactly lipid profile should be interpreted. उसमें से भी कौन सा गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का ही अभी तक क्लैरिटी नहीं आता है किसी को. तो बाकी के ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर लाइक दे आर जस्ट very easily ignored, I would say. Very true. So from what I feel is I have always been suggesting to everyone that ये जो सारे advancements हैं ये सारे science के हैं, technology के हैं. It's not just कि ये modern medicine की advancement है, ये science की है. And as Ayurveda is also a science, it is a main health science. तो हमें ये scientific advancement अपनी practice में use करने ही चाहिए. That is how we will be able to work on solving these chronic health issues. And the research which you have presented with Madhavbag, it is really commendable. And I'm pretty sure all these doctors who have joined us today, they must have got a lot of questions. अगर किसी को कुछ पूछना है तो please definitely go ahead. You can raise your hand if you want to ask. For 5 to 10 minutes, we can give you a time to, maybe unmute yourself and ask the question as well. I think the session was much more interactive and everyone enjoyed this session. And मैंने देखा काफी सारे participation जो है वो अभी तक रुके हुए हैं. They are like कि हमें और बताइए कार्डियोलॉजी के बारे में, हार्ट के कैसे हम आयुर्वेद में हार्ट डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं. और sir has really explained a very vast knowledge according to Samhita सिद्धांत, according to Ayurveda, और उसको मॉडर्न हम उसमें कैसे ले जा सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो it was very wonderful session and amazing session it was. So participants